Hello student, welcome to you all in science class. In last classes we will start your chapter number 8. The basic unit of life is cell, and in last class we will discuss the part of the cell membrane, nucleus and cytoplasm, and today we will discuss the topic of your chapter, last topic, eukaryotes and prokaryotes, and after that we will see the summary of this chapter. So let we start. So, the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. One thing is very important. We know that about the unicellular and multicellular. Unicellular are only having one cell, and the multicellular are one more than one cell. So, in eukaryotic cell, the multicellular organism are formed, and the prokaryotes, the single cell organism is formed like a bacteria and blue green algae. So the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of the multicellular organism. There is no nuclear membrane, the cell having nuclear material without nuclear membrane. So देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सिंपल सा है. जो प्रोकैरियोट्स होंगे दे हैव ओनली वन सेल आर प्रेजेंट, एंड प्रो यूकैरियोट्स दे हैव मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड. एंड द सेकंड है द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट प्रेजेंट इन prokaryotes, and eukaryotes, a well organized nucleus and nuclear membrane are present, and except ribosomes all cell organelles are absent in prokaryotes, and almost all cell organelles are present in eukaryotes, like a cell organelle mitochondria, ribosome, Golgi apparatus. So example of eukaryotes, यूकैरियोट्स में सभी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग, प्लांट सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट इन प्रोकैरियोट्स द मेन एग्जांपल इज बैक्टीरिया एंड blue green algae. I think you all understand about the eukaryotes and prokaryotes. And the next one is the difference between plant and animal cell. We also study and understand about the difference between plant cell and animal cell. So let me start seeing the summary of this chapter. So first point is ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल ऑर्गन. सभी ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ से होता है, उसकी सेल से. सो cell, then group of cell, then they made up of tissue made up of organs, and organ made up of whole body. So organ are made up of still smaller parts. The smallest living part of an organism is cell. Cell wall first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज. इसकी डिफरेंट टाइप के शेप और साइज होते हैं. नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेराइज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. तो इसमें जो नंबर होते हैं सेल्स की वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है. सो some cell are big enough to be seen with the unaided eye, hence egg is an example. देखो जो egg होता है वो क्या हम उसे naked eyes से भी देख सकते हैं, but like a PPLO, pleuropneumonia, smallest cell that have we seen in the help of microscope. So some organisms are single cell while other contain large number of cell. Example unicellular and multicellular. The single cell of unicellular organism perform all the basic function performed by variety of cell in multicellular organism. देखो जो unicellular होंगे उनकी one cell ही हर वर्क को करेंगी, एंड मल्टीसेलर ऑर्गन्स में डिफरेंट सेल होती हैं डिफरेंट वर्क के लिए. The cell has three main parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane give to shape cell. Cytoplasm, there are cell organelles are present, and nucleus, the genetic material, gene and chromosome are formed, and nucleus is separated from cytoplasm by nuclear membrane. जो न्यूक्लियस है उसको सेपरेट कौन करता है, साइटोप्लाज्म. एंड सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जो सेल्स होती है विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल. और जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा न्यूक्लियस दैट आर यूकैरियोट्स. एंड प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इज हैविंग टू a cell wall. In plant the cell wall is present, and animal the cell wall is absent. So colored body called plastids are found in plant cell only, and the green plastid contain chlorophyll, and that is the help of in the process of photosynthesis. Plant cell has a big central vacuole. जो plant cell होती है उनके जो center में एक बहुत बड़ा vacuole present होता है, and the animal cell very small. There are the water is absorbed function of vacuole. So I think you all understand the chapter cell
and thank you for watching this video.